हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन इन 2D जो है डिस्कस करेंगे। और सर्कुलर मोशन में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दोज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर बेस्ड अपॉन सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन, दैट इज 1 मीटर, and the mass of the bob is 100 gram. The speed is 1.4 meter per second at the lowest point in its path. Find the tension in the string. तो हमें टेंशन फाइंड आउट करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है? मास, कितना मास गिवन है? 100 ग्राम, दैट मीन्स 1/10 kgs, and the speed at the lowest point which is 1.4 meter per second, and length of the string which is 1 meter. So you can draw the diagram. You can draw the diagram first. So this is the bob of simple pendulum whose weight will be in vertically downward direction, mg. This is the tension in the string, and this is the centripetal force. Therefore you can find the tension by using the formula mv square by L plus mg. T equals to 1/10 into 1.4 square. Length is 1 meter. 1/10 into 10, and this comes out to be 1.4 square by 10, 0.196 plus 1 equals to 1.196 Newton. So this is our required result, or you can say this is nearly 1.2 Newton. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द स्पीड is 1.4 meter per second. String makes an angle 0.2 radian. Now the angle is given in radian, 0.2 radian. So in this situation, when you will draw the diagram, this is the bob, and let us say this angle is 0.2 radian. Here will be the tension, here will be the component of weight which is mg cos theta, and in this direction will be centripetal force mv square by, and therefore tension is given by, here tension will be mv square by L plus mg cos theta, or you can write it down as mv square by L plus mg. In place of cos theta we can write 1 minus theta square by 2, because this is given in question, 1 minus theta square by 2. So this becomes m is 1/10 as in previous problem, v is 1.4 square, L is 1 meter, plus m is 1/10 into g is, you can put the value of g as 9.8 into 1 minus theta square means 0.2 radian square divided by 2. So this becomes 0.196 as we have calculated in previous problem, and this becomes 9.8/10, 0.98 into, and this should become 1 minus 0.02, 0.98 again, and this comes out to be 0.196, and this should be 0.9604, or you can say the tension becomes 4651, nearly 1.1
16 Newton. This is our required result. This will be your answer. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी, है ना, कि यहाँ हमें कहा गया है कि एक सिंपल पेंडुलम है और यहाँ बना लेते हैं। पहले जो भी हमें गिवन है उस सिचुएशन को हम लोग ड्रॉ करेंगे ताकि इजीली हम लोग समझ पाएँ। ठीक है, तो ये हमारा कह देते हैं हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन। तो आप जानते हैं कि ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंगल जो गिवन है थीटा नॉट गिवन है, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा, ये वेट का जो कंपोनेंट इधर होगा वो होगा mg cos थीटा। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे आप सब लोग जानते हैं काइनेटिक जीरो। काइनेटिक जीरो क्यों होता है? क्योंकि v जीरो हो जाता है। तो v जीरो तो यहाँ कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने नहीं वाला है, तो ये दोनों फोर्सेस जो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। सो वी कैन राइट t एज, सॉरी एंगल इज थीटा नॉट, mg cos थीटा नॉट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।